Hello students, welcome to Mathematics Scholio. Today we will do a question of definite integral by using complex numbers. First, you pause the video for a while, try this question, and after that see the solution. So here is the question. We have integral, we have to find integral 0 to 10 pi, and we have product of cos x, cos 2x up to 7x. One thing you have to keep in mind, if angle of cos will get double, then it is easy to calculate because that series we can easily calculate. But here case is not like that. Angles of cos are cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x, cos 5x, cos 6x, cos 7x. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि is it a periodic function because integral is 0 to 10 pi. Yes, it is periodic. What is period? 2 pi. Obviously it's period, but we can check for pi as well, whether pi is its period or not. How we can check that? Consider a function fx pi, k is from 1 to 7 cos k pi. ठीक है, अगर हमें ये चेक करना है कि whether pi is period or not, you have to find value of f of pi plus x, which is equals to k from 1 to 7 and cos, this is x cos k pi plus x. Now you can check, whenever k is odd, we will get minus cos x. If k is even, we will get plus cos x. From 1 to 7, how many odd numbers are there? We have 4 odd numbers are there. 1, 3, 5 and 7. It means ultimately those negative signs will convert into positive and we will get f of pi plus x is equals to f of x. So one thing is clear that yes, pi is the period of this function. Okay, तो जो हमारा इंटीग्रल है वो अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा because integral is 0 to 10 pi, but pi is the period of function. Therefore we can write it 10 times 0 to pi product k from 1 to 7 cos kx dx. अब आप आगे कैसे कैलकुलेट करें? अब इसे अगर एक्सपेंड करके आप लिखना चाहते हैं तो ये है 0 टू पाई cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x, cos 5x, so on up to cos 7x. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करो और सम में कन्वर्ट करते रहो, काफ़ी लेंथी हो जाएगा. फॉर्मूला कोई हमारे पास एज इट इज़ डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास कोई है नहीं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचती है, दैट इज वी हैव टू यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. हाउ वी कैन यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हियर? I is equals to 10 times 0 to pi, and this expression is e product k from 1 to 7 e iota kx plus e minus iota kx whole upon 2. This is what we have, right? अब देखो, इसे सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो 2 can go out, we will get 2 power 7 and integral 0 to pi and product of e iota x plus e minus iota x into e 2 iota x plus e minus 2 iota x and so on. The last term which we will get is e 7 iota x plus e minus iota x and dx. This is what we have. अब इसका क्या किया जाए? एक बार हमें प्रोडक्ट लेना होगा, लेकिन इसके बाद वी हैव टू बी सिस्टमैटिक इनफ. कैसे क्या करना होगा?
when we will take product, we can say that we will get plus minus 1, plus minus 2, all these combinations we will get, plus minus 4, plus minus 5, plus minus 6, plus minus 7. और ये आए कैसे देखो, if you want to see how we will get this, first try for these two. होगा क्या, आयोटा एक्स मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा एक्स से, फिर आयोटा एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 आयोटा एक्स से, आयोटा एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 आयोटा एक्स से, फिर माइनस आयोटा एक्स मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा एक्स से, और माइनस आयोटा एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 आयोटा एक्स से. इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा ई एक्स प्लस 2x, ई एक्स माइनस 2x, ई माइनस एक्स प्लस 2x, ई माइनस एक्स माइनस 2x, यानी कि प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 के सभी कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे. 2 के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि यू कैन थिंक लाइक दिस. सिमिलरली इफ देर आर 7 टर्म्स, यू हैव टू कैलकुलेट ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, सो ऑन अप टू प्लस माइनस 7. और कितने कॉम्बिनेशंस होंगे इसके, वी विल गेट 2 पावर 7 कॉम्बिनेशन मीन्स 128 कॉम्बिनेशंस. ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, 128 कॉम्बिनेशंस, हाउ वी शुड इंटीग्रेट इट, क्या किया जाए इसमें. तो इसमें एक क्लेम मैं यहां पर लिख रहा हूं. आपको यह ध्यान रखना है कि if we will get e power mx iota dx where m is non-zero, then there must exist e power minus mx as well. कैसे होगा वो, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन पॉजिटिव के लिए है, राइट, वो वही सेम कॉम्बिनेशन नेगेटिव साइंस के लिए भी होगा. मतलब मान लो किसी कॉम्बिनेशन से वी आर गेटिंग m, change sign of each term, you will get minus m. So for corresponding to every term e power mx, we will have e power minus mx. इन दोनों का जब आप सम करेंगे, when you will take sum of these two, you will get 0. When you will take sum of these two, you will get 0 to pi twice of cos mx dx, and this integral is equals to 0. तो मतलब क्या हुआ कि इस कॉम्बिनेशन में, मतलब ये हुआ कि in this combination whenever we will get e power non-zero x, we will have integral value equals to 0. We will have integral value of that equals to 0. Only those terms, only those combinations which will give us, only those combinations which will give us sum as 0 will give us non-zero integral value. तो अब हमारी जो प्रॉब्लम है, that is reduced to calculate how many non-zero combinations are there. How many non-zero combinations are there? Non-zero combinations of plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 5, plus minus 6, plus minus 7. ये वाला question, that combinations which give us value 0, I asked a lot of my old students. So many students gave the answer, but from IIT Kanpur, first two answers came from IIT Kanpur, right? So हमारी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर समझो आप, कि we have to find number of combinations such that this sum is 0. अगर हम सभी पॉजिटिव साइन लें, if all are positive sign, then we will get total sum 28. If we want zeros, if we want sum 0, it means we should get 14 as sum of positive terms minus 14 as sum of negative terms. तो अब हमें ये चेक करना है कि how many, which are the possible cases when we will get sum plus 14. First of all, if there is only one positive term, we can't get 14 sum. If we are taking two positive terms, we can't get sum 14. So we have to take at least 3 terms to get the sum 14.
So 3 positive terms are necessary. Which those 3 positive terms are possible? First one is 7, 6, 1, 7, 5, 2, 7, 4, 3 and 6, 5, 2. और इनके corresponding जो negative terms होंगी, one of the negative term I am writing here, similarly all. So these are 4 cases. These are 4 cases when we are getting sum 14 by using 3 terms. Okay, similarly we can say how many terms are there. Sum 14 by using 4 terms, that is obviously again these 4 cases, the cases which are corresponding to 3 terms will give us sum 14. So again we will have 4 cases. मतलब अगर हमें 4 terms का sum 14 चाहिए तो कितने cases होंगे? By symmetry we can say 4 ही cases होंगे. तो how many terms we are getting such that sum of this combination is 0? 4 वो वाले cases जब 3 terms हमें plus 14 दे रही हैं, 4 वो वाले cases जब 4 terms हमें plus 14 दे रही हैं. तो total जो cases हुए ये वो हो गए 8. Now come to our original question. Question was this, right? We want to find this और हमें ये पता चल गया कि we have to find number of ways such that this combination will give us sum 0. और वो कितनी ways आ गई? We have 8 ways. So answer is 5 by 2 power 6 into 8 integral 0 to pi. This 8 क्योंकि 8 terms ऐसी हैं when we are getting e power 0. e power 0 means 1. तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 5/2 power 6 into 8 into pi. ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके वैल्यू कैलकुलेट कर लें. इट इज इक्वल्स टू 5 pi upon 2 cube. This is what we are getting.